2018 question paper analysis. As we have discussed yesterday, that in 2017, majority of the questions were based on ancient Indian history, and they were more analytical questions rather the direct question which were asked earlier. तो हा ट्रेंड कसा बदलत गेलेला आहे प्रश्न विचारण्याच्या ट्रेंड मध्ये, that's what we'll try to understand. So all of you can see the newspaper on your screen. Sorry, question paper on your screen. Is it visible? Yes, sir. Question paper दिसतोय सर्वांना? हाँ, sir. I think last time we have not discussed the modern questions of 2018 as well. Maybe we have skipped it or we have not done it. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं. He wrote the biographies of Mazzini, Garibaldi, Shivaji, and Sri Krishna. Stayed in America for some time and was also elected to the Central Assembly. Who was he? तो ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है. Such type of questions like a description of a person is given, a person associated with the freedom struggle of India or national movement of India in the Indian national movement, and वो व्यक्ति कौन है ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है. तो here they have given a description that कि he wrote the biographies of Mazzini. Mazzini कौन होता है ये आपको पता होना जरूरी है. Mazzini, Garibaldi, Shivaji. Shivaji, all of you know. He wrote the biography of Shivaji. He has written the biography of Sri Krishna. He has written the biography of Mazzini. Mazzini means he was a leader of Italy, unification of Italy. World history में हम discuss करेंगे. Those who are going to keep history as their optional subject. तो उस समय में unification of Italy and unification of Germany ऐसे दो subjects हैं. So one of the important leader of the Italy at that time during the unification of Italy was Mazzini. और Mazzini ने उस समय में he has established one organization called Young Italy. तो यंग इटाली नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाया था. तो many Indians got inspired by this unification of Germany and unification of Italy during the freedom movement, especially during Swadeshi movement के दौरान many Indians got inspired by Germany and Italy. So who among the following wrote the biographies of Mazzini, Garibaldi, Shivaji, and Sri Krishna? And he also stayed in America for some time and he was elected to the Central Assembly. Who was he? So it is a very specific question about a specific person. अगर आपने किसी व्यक्ति के बारे में अगर पढ़ा है कि जो किसने Mazzini लिखा है, who was there in America, etc., then only you will write the answer of such question. ऐसे question, it's a kind of trap question, or very few people will be able to solve such type of questions or attend such type of question in exam hall. तो अगर आपको पता है exactly who was such person, then only you should attempt such type of question or you should skip it out. Is it clear? So I think the answer of this question maybe Aurobindo Ghosh हो सकता है. I'm not very sure. He wrote the Mazzini, Garibaldi, Shivaji, Sri Krishna. He stayed in America for some time. All of these, if you can check it out, Aurobindo Ghosh, Bipin Chandra Pal, Lala Lajpat Rai, and Motilal Nehru, all these are the extremist leaders. GS modern Indian history मध्ये आपण बघितलेलं होतं की there are two types of leaders, extremist leaders and moderate leaders, extremist phase and moderate phase. So these are the leaders of the extremist phase of India. So who has written this biographies of Mazzini? हा क्वेश्चन विचारण्यात आलेला, right? Anybody is having the official answer? की just check it out. What is the answer of this question? तर वी.डी. सावरकर आणि लाला लजपत राय यांनी लिहिलंय. लिहिलंय. यस. तो वी.डी. सावरकर ऑफकोर्स वी.डी. सावरकरने यंग इटालीच्या धर्तीवर भारतामध्ये अभिनव भारत ही संघटना त्यांनी बनवलेली होती. म्हणजे जसं इटलीमध्ये मॅझिनीने इटलीच्या युनिफिकेशनला म्हणजे इटलीच्या एकत्रीकरणामध्ये रोल प्ले केलेला होता. सेम रोल वी.डी. सावरकर ऑल्सो वॉन्टेड टू प्ले. So yes, the answer of this question is Lala Lajpat Rai. Anyways, answer Lala Lajpat Rai आहे. But what you need to do, you need to go and check it out. What is the contribution of Aurobindo Ghosh? What is the contribution of Bipin Chandra Pal? And what is the contribution of Motilal Nehru in India's freedom struggle? You need to study, right? So थोड़ा brief में you study about Aurobindo Ghosh, Bipin Chandra Pal, Lala Lajpat Rai, and Motilal Nehru in India's freedom struggle. Clear? Check. Now let's move on to next page.
Okay, the well-known paintings of Bani Thani belongs to art and architecture question. Well-known paintings of Bani Thani. Last year also there was a question about a painting. Anyone remember? Last year means 2017. When yesterday the question paper which we discussed, तो हमने देखा था कि there was a question on painting. Anyone remember on which painting the question has been asked? पद्म पानी पेंटिंग के बारे में पूछा था. You remember? अजंता, there was a painting of Padma Pani Bodhisattva, right? And there was an option of Bagh painting, right? पद्मपानी अजंता एलोरा. Yes. So Bagh painting जो है उससे related last time option था. तो when in 2018, when sorry 17, when question was asked related to the painting of Ajanta, you were supposed to study the other paintings in India. So here they have given the well-known painting of Banithani belongs to which school? Like Bundi school, Jaipur school, Kangra school, or Kishangarh school. So paintings in India. Yesterday we have discussed the architecture of India. GS paper one में topic है art and architecture and literature since ancient to modern period, right? So separately I will be giving you a notes on art and architecture that various forms of art like music, literature, painting, temple, right from Indus Valley civilization से मॉडर्न पीरियड तक कौन से पेंटिंग स्टाइल इंडिया में थे, वी विल डिस्कस अबाउट इट. सो बनी थानी ये कौन से स्कूल ऑफ पेंटिंग से बिलोंग है, मतलब कौन से एरिया में ये बिल्डिंग फेमस है, दैट क्वेश्चन इज आस्क्ड. दैट इज बूंदी स्कूल, जयपुर स्कूल, कांगड़ा स्कूल एंड किशनगढ़ स्कूल. कांगड़ा के पेंटिंग के बारे में न्यूज़पेपर में बार बार आता रहता है. डू यू रिमेम्बर? कांगड़ा स्कूल हिमाचल प्रदेश में ये लोकेटेड है, तो वहां से रिलेटेड आता है. तो आज आप जाकर क्या करेंगे, यू विल गो एंड चेक इट आउट. व्हाट इज बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग, कहाँ पर है एंड उसके फीचर्स क्या है. व्हाट इज जयपुर स्कूल, जयपुर मीन्स ऑफकोर्स राजस्थानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग. कांगड़ा स्कूल इट इज हिमाचल प्रदेश. किशनगढ़, आई थिंक किशनगढ़ इज इन इधर बिहार और यूपी में होगा. तो यहाँ पर किस टाइप के पेंटिंग और इसके क्या फीचर्स होते हैं, दैट्स व्हाट यू आर सपोज टू चेक इट आउट. Next time, question can be asked about this painting times in India. Clear? This is not question of ancient history. This is a question of art and architecture. Okay, question number 44 with reference to the cultural history of India. Consider the following statements. पहला है most of the Tyagaraja Kirtis are devotional songs in praise of Lord Krishna. फिर क्वेश्चन पूछा है मोस्ट ऑफ द त्यागराजा कीर्तिज, त्यागराजा ने लिखे हुए जो कीर्तिज हैं, दे आर द डिवोशनल सॉन्ग, भक्ति सॉन्ग है इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा. व्हेन यू रीड दिस स्टेटमेंट, व्हाट यू थिंक, इस स्टेटमेंट में क्या लाइकली मिस्टेक होने के चांसेस हैं? व्हाट कुड बी द मिस्टेक इन दिस स्टेटमेंट? यस नागरत्ना, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट कुड बी द लाइकली मिस्टेक इन दिस स्टेटमेंट? No idea, sir. व्हेन यू रीड द स्टेटमेंट, जस्ट रीड द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट पढ़ने के बाद में आपको क्या लगता है कि वेयर देयर माइट बी अ wrong in this statement? Sir, most of the. Sorry? Most of the. No, I'm not getting your voice. Can you please bit louder? Sir, most of the Tyagaraja Kirtis. Most of the Tyagaraja Kirtis are devotional song in praise of Lord Krishna. Whether was it in the praise of Lord Krishna or was it in the praise of any other god, right? Yes, sir. Got it? When you read the statement, what you need to focus more on? तो ते म्हणजे त्यागराजे कीर्ती जे लॉर्ड कृष्णा से रिलेटेड होते का लॉर्ड ते कुठल्या दुसऱ्या या किसी और भगवान की कीर्ति उन्होंने बनाए हुए थे, ऐसे हो सकता है. राइट? Yes or no? So just check it out, confirm it. Yes. Tyagaraja Kirtis were in praise of Lord Krishna or it is in praise of any other lord, any other king? Because second statement, if you check it out, Tyagaraja created several new ragas. Of course, this statement will be correct only because here Tyagaraja is a singer. It means he have created several new ragas. So this statement, इसमें there is nothing extreme और यहाँ पे wrong होने के chances नहीं है, right? Second statement is correct. First statement में it could be like we know UPSC is having a habit of what? Interchanging the fact or interchanging the information, right? So let's confirm it once. मतलब त्यागराजा कीर्तिज are devoted to which god? Sir, God Rama, sir. God Rama. You understood? See,
इवन आई डिड नॉट नो हु इज त्यागराजा कीर्ति, मतलब त्यागराजा कीर्ति क्या है ये मुझे भी पता नहीं है. बट व्हेन आई नो द साइकोलॉजी ऑफ द क्वेश्चन फ्रेमर, आई नो द हैबिट ऑफ द यूपीएससी, व्हेन आई रीड द स्टेटमेंट देन ओनली आई विल, मतलब व्हेन आई एम रीडिंग द स्टेटमेंट तभी मुझे लग जाएगा कि हो सकता है इट मे नॉट बी इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा, इट मे बी इन प्रेज ऑफ एनी अदर गॉड. So this is how you have to understand the question paper. Is it clear? So if the first statement को अगर हम wrong consider करेंगे तो क्या हो जाएगा फिर? We can eliminate option A because 1 and 3 is there. We can eliminate option C because 1, 2 and 3 there, right? Now 2 and 4 only, and 2, 3 and 4. Second statement is correct only because त्यागराजा created several new ragas. मतलब ये statement में कुछ गलत होने के chances ही नहीं है इसमें. Am I right? Second है अन्नमाचार्य एंड त्यागराजा आर कंटेम्पररीज. अन्नमाचार्य एंड त्यागराजा कंटेम्पररी, मतलब ये एक समय में ही थे ऐसे पूछा गया है. सो अब ये इंफॉर्मेशन पता होना जरूरी है कब फैक्चुअली. देन लास्ट है अन्नमाचार्य कीर्तनाज आर डिवोशनल सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ लॉर्ड ऑफ वेंकटेश्वरा. अब यहाँ पे लॉर्ड वेंकटेश्वरा है या नहीं है, लाइकली मिस्टेक यहाँ पे होने के चांसेस है. राइट? So what should be the answer? 1, 2 and 4 only, or 2, 3 and 4 only? 2, 3, तो 4. 4 तो करेक्ट ही है यहाँ पर. अगर if you check it out 4 is correct. So answer should be either 2 and 4 only or 2 and 3 and 4 only. So you have to take a risk and mark either 2 and 4 only or 2, 3 and 4 only. If you were there in exam hall, what would you have marked? 2, 3 and 4 or 2 and 4? 2, 3 and 4. Am I right? एनिवेज अशा प्रकारचे प्रश्न यूपीएससी विचारत आहेत कल्चरल हिस्ट्री मध्ये. वेरियस द सेंट अँड दे डिवोटेड देअर भक्ती टुवर्ड्स विच गॉड, that is what is asked. The question is related to Bhakti period of India, Bhakti moment in India. Bhakti moment hai, Bhakti moment and Bhakti sense. You remember this topic we have already discussed in offline class, in ancient Indian and medieval Indian history class. Check. Yes. Chal, now let's move on to next page. Question number 52, modern Indian history question. Economically, one of the results of the British rule in the 19th century was. 19th century में ब्रिटिश रूल का इकोनॉमिक रिजल्ट क्या था, कॉन्सिक्वेंस क्या था, राइट? 19th मींस 1800 to 1900 और 1900 to 2000. 1800 to 1900, राइट? 19th century. तो 1800 में क्या था? इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट. इंडियन हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गया था क्या? No. In fact, Indian handicrafts has got what? Destroyed during this 19th century. Growth in the number of the Indian-owned factories? No. Indian-owned factories नहीं हुआ था. There were British-owned factories, right? Commercialization of Indian agriculture? Yes. Indian agriculture got commercialized. Means Indian agriculture, indigo, plantation, tea, coffee, as well as sugar cane. ये इस समय में बढ़ गया था. Which were the need of the colony, colonialism. Last colonial rule. Last a rapid increase in the urban population? No. So the correct answer of this question is C. I think ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था पहले. Yes, sir. Who among the following were the founders of Hind Mazdoor Sabha? कल हमने देखा था. Who was the founder of the Swatantra Party? Anyone remember? Who was the founder of the Swatantra Party? राजाजी. Yes. So ऐसे ही क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं. ओके, क्वेश्चन चंपारण सत्याग्रह क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. We will discuss this question number 71. Do you remember? In 2017, there was a question related to one of the sect of the Buddhism and Jainism. Statement based question पूछा गया था, याद है?
स्थविर वादन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। एंड देयर वाज वन मोर क्वेश्चन, दिस इज द सेक्ट ऑफ जैनिज्म लिखा था, शायद दे वर द सेक्ट ऑफ द बुद्धिज्म। स्टेटमेंट उन्होंने इंटरचेंज किया था, कल के क्वेश्चन पेपर में याद है। तो here, with reference to the religious practices in India, the Sthanakvasi sect belongs to. Sthanakvasi sect belongs to which, which of the following? Buddhism, Jainism, Vaishnavism, Shaivism. So, as I told you yesterday, you need to study. It is, UPSC's favorite. The various sects of the Jainism and Buddhism. इस टॉपिक पे हर साल बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, sects of Buddhism and Jainism. Anyone knows Sthanakvasi is a sect of which sect, which religion? Buddhism, Jainism, Vaishnavism और Shaivism तो होगा ही नहीं. It can be either Shaivism, Buddhism or Jainism. So it is a Jainism. कल हमने देखा था बुद्धिज्म का था, right? Do you remember? कल का क्वेश्चन किसी को याद है? Which sect of the Buddhism related question statement based question में statement दिया गया था कि these are the sect of the, sorry? Hinayana, Mahayana. Question about. Not Hinayana, Mahayana. Yesterday, other what you can say, these were there. मतलब sects थे. कल के क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस किया था. Go and check it out once. Mahayana, Hinayana भी तो है ही है, but apart from that Mahayana and Hinayana also, there are so many other sects within Buddhism. जो कल के न्यूज़पेपर में पूछा गया. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72. मुगल आर्किटेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया. विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. व्हाइट मार्बल वाज यूज्ड इन मेकिंग बुलंद दरवाजा. एनीवन रिमेंबर बुलंद दरवाजा वाज बिल्ट बाय व्हिच मुगल रूलर? अकबर सर. अकबर. सो बुलंद दरवाजा वाज बिल्ट एट फतेहपुर सिकरी. am I right? लिया भी है नीचे यहाँ पर. Yes sir. दैट बुलंद दरवाजा एंड खानका एट द फतेहपुर सिकरी. सो ये बुलंद दरवाजा बनाने के लिए व्हाइट मार्बल वाज यूज्ड. सो व्हाट यू थिंक, यहाँ पे लाइकली मिस्टेक होने के चान्सेस है? व्हाइट मार्बल वापरलेला आहे का रेड सॅन्डस्टोन वापरलेला आहे बुलंद दरवाजा बनवण्यासाठी? दॅट्स व्हॉट यू नीड टू राईट. सो व्हेन यू आर रीडिंग दिस, व्हेन यू आर स्टडीइंग दिस की अकबर हैज बिल्ड बुलंद दरवाजा, in class I have asked you to go and check it out exactly how the बुलंद दरवाजा is built, right? Do you remember? तो बुलंद दरवाजा Yes, जेव्हा sir. तुम्ही गुगल मध्ये सर्च करून बघितला होता, तो was it made up of white marble or was it made up of red sandstone? Any idea? Red sandstone sir. Red Red sandstone. and yellow sandstones. So here also what UPSC done? UPSC has changed it. Interchange. ये UPSC की आदत है. तो व्हाइट मार्बल. सो जैसे जैसे ही आप यूपीएससी में स्टेटमेंट पढ़ते हो ना, तो यूपीएससी कहाँ आपको ट्रैप में पकड़ने की कोशिश कर रहा है, यूपीएससी कहाँ इंटरचेंज कर रहा है, ये इमीडिएटली इट शुड क्लिक यू. ये कब क्लिक हो सकता है? व्हेन यू रीड द क्वेश्चंस मोर ऑफन. जितना ज्यादा बार आप क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे, इस तरीके के स्टेटमेंट पढ़ोगे, यू विल कम टू नो द हैबिट ऑफ अ पर्सन. जैसे आई ऑलवेज से अगर आप किसी व्यक्ति को बार बार मिल रहे हो, तो यू विल कम टू नो कि सामने वाला इंसान किस इंटेंशन से बात कर रहा है. यू अंडरस्टँड इट राईट? व्हेन यू टेक एखाद्या व्यक्तीच्या सोबत तुम्ही खूप वेळ जास्त बोलला तर आपल्याला कळतं. जसं आता मी क्लासमध्ये देखील शिकवत असताना सुरुवातीला मे बी यू माइट हैव नॉट अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू से, बट स्लोली यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, राइट? तो वैसे ही जितना ज्यादा आप यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर को पढ़ोगे, जितना ज्यादा आप यूपीएससी के स्टेटमेंट पढ़ोगे, क्वेश्चंस पढ़ोगे, एग्जाम हॉल में ना इट विल क्लिक यू कि यस, जिस क्वेश्चन में दिस यूपीएससी इज ट्राइंग टू चेक इन यू, राइट? तो व्हाइट मार्बल वाज यूज्ड इन मेकिंग द बुलंद दरवाजा एंड खानकाट फतेहपुर सिकरी. तो हियर यू विल फाइंड आउट दैट लाइकली मिस्टेक. इट माइट बी नॉट व्हाइट मार्बल, इट माइट बी सम एनी अदर द स्टोन मस्ट बी यूज्ड, राइट? व्हेन यू रेड द नीचे वाला स्टेटमेंट अगर आप देखोगे, रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल वर यूज्ड इन मेकिंग द बड़ा इमामबाड़ा. अब यहाँ पर क्या है? एक्चुअली इमामबाड़ा वाज built with the white marble and Buland Darwaza was built with the red sandstone. So here they have interchanged it. So what should be the answer then? Neither one nor two. Understood? Is it easy to find out the answer? But anyways, अब यहाँ पे क्या expected है? UPSC has asked a question related to the architecture of the Mughal period. तो जितने भी सारे architecture बनाए गए मुगल period में and even during Sultanate period, so you will check the image in the Google image.
सो दैट उससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन पूछा गया फीचर से रिलेटेड, दैट you can able to solve the answer. Like here, you agar if there is any other competitive exam, then the question would have been like who has built बुलंद दरवाजा. म्हणजे प्रश्न एमपीएससीच्या किंवा दुसऱ्या एक्झाम मध्ये किंवा क्लेरिकल एक्झाम मध्ये प्रश्न विचारला जातो, एसएससी एक्झाम मध्ये प्रश्न विचारला जातो की खालीलपैकी कुणी बुलंद दरवाजा बांधलेला होता, राईट. बुलंद दरवाजा कुणी बांधलेला आहे? मग ऑप्शन अकबर, शहाजहान, जहांगीर अँड औरंगजेब. But here, UPSC is not expected you to know who has built what. UPSC is expected you to know the features of that architecture. So whether which the stone is used, white marble, red sandstone, what is the architectural style? That is what UPSC is expected from you. Understood? यूपीएससी की क्या अपेक्षा होती है? तो ये अपेक्षा यूपीएससी की है, तो आपको पढ़ाई करते वक्त वैसे ही पढ़ाई करना पड़ेगा. So rather than focusing more on the factual information, we will focusing more on analytical information or conceptual information. Is it clear? Chalo, now let's move on to next page. Which one of the following foreign traveler elaborately discussed about the diamonds and diamond mines in India? Many foreign travelers have visited to India, like during the Vijayanagar Empire, even during the Muhammad bin Tughlaq's times, even before that, many Chinese travelers like Fasil, Huan Chang, then Kitabul Hind किसने लिखा था याद है? Kitabul Hind was written by one of the Arab traveler. तारिकुल हिंद भी कहा जाता है, किताबुल हिंद भी कहा जाता है. अल बेरूनी, बरानी सर, अल बेरानी, very good. Al Beruni, yeah, many like Abdul Razzaq, Nikitin. There are so many people have visited India आणि त्यांनी त्याच्या काळामध्ये भारत कसा होता त्याचं वर्णन केलेलं, right? So one of the traveler has elaborately discussed about the diamonds and diamond mines in India. So which among the following the traveler has written about it? That is what is asked here. Again, it is a very direct question. Here you cannot have any guesswork like this. Like this type of questions are easy to solve. Question number 72 is this is a question, है ना? Such type of questions are easy to solve, but such type of questions you can only solve when you have read about it. मतलब आपने कहीं पढ़ा है कि किसने डायमंड के बारे में लिखा है, तभी आप कर सकते हो. You can't have guesswork in this question. Am I right? So the options are Francois Bernier, Jean-Baptiste Tavernier, Jean de Thevot, and Abbe Batherke. So all these are the foreign travelers who visited India, during the medieval period, right? So which traveler elaborately discussed about the diamond? तो मुझे लगता है शायद answer might be Jean-Baptiste Tavernier. Yes, Shweta, you're saying something. Sir, B. Jean-Baptiste Tavernier, and I think he has traveled during the Vijayanagar Empire or Vijayanagar Empire के वक्त में ही he has mentioned about, because Vijayanagar Empire ही ऐसा एक empire था जिस समय पे बहुत बड़े पैमाने में diamond was sold in open market, especially in the Vijayanagara's open market. Clear? So the answer of this question is B, but you will be going and check it out. Francois Bernier visited in India during whose time and what was the description? Jean de Thevot, he visited to which empire in India and what was his description? And Abbe Barthélemy. Is it clear? तो ये याद में रखना है कि जो करेक्ट आंसर है वो तो आपको देखना ही है. You will check it out, but at the same time, you will also check what are the wrong options information as well. Clear? Now, question number 17. In this year, you can check it out. There are at least 4 to 5 questions related to Buddhism and Jainism. Every year, there is at least 2 to 3 questions because UPSC का favorite है with reference to the Indian history. Who among the following is a future Buddha? Future Buddha मतलब भविष्य में आने वाले हैं. Future Buddha yet to come to save the world. आपण बघतो ना की इव्हन हिंदू धर्मामध्ये देखील एक बिलीव आहे की एक अवतार येणार आहे, म्हणजे जगा जेव्हा प्रलय येईल किंवा जगामध्ये आपल्या पृथ्वीतलावर जेव्हा मोठ्या प्रमाणामध्ये अन्याय अत्याचार वाढेल किंवा त्यावेळेस लोक म्हणजे विवेकी नसणार आहेत, तर त्यावेळेस एक अवतार येऊन लोकांचं रक्षण करणार आहे असं एक बिलीफ आहे हिंदू धर्मामध्ये देखील आहे, राईट? विच अवतार इज देअर ऍज पर द हिंदू रिलीजन इज गोइंग टू कम? कल्की अवतार, राईट? तसाच मुस्लिम धर्मामध्ये देखील, इस्लाम धर्मामध्ये देखील एक बिलीव आहे की इन फ्युचर जीसस क्राइस्ट, राईट, जीसस क्राइस्ट विल रिबॉर्न अगेन. मतलब इस्लाम धर्मीय लोकांमध्ये हे आहे की पुढे भविष्यामध्ये
म्हणजे येशू ख्रिस्तांचा पुनर्जन्म होईल, तसं बुद्ध धर्मामध्ये देखील एक बिलीफ आहे दॅट भविष्यामध्ये पुन्हा एकदा नवीन बुद्ध येणार आहे अँड ही इज गोइंग टू कम अँड सेव्ह द वर्ल्ड. सो विथ रेफरन्स टू द अँड ऑफकोर्स हे अशा प्रकारची जी बिलीफ आहे तर हीनयाना बुद्धिझम मध्ये असेल का हे महायाना बुद्धिझम मध्ये असेल? I think सर Bahayana. येस जयेश, व्हॉट यू थिंक? म्हणजे भविष्यामध्ये पुन्हा एकदा नवीन बुद्ध येणार आहेत जगाला सेव्ह करण्यासाठी, असं बिलीफ हीनयानामध्ये असू शकतो का महायानामध्ये असू शकतो? Because you सर see, हीनयानामध्ये. नो, महायानामध्ये आहे. बिकॉज महायाना बुद्धिझम ओनली बिलीव्ह इन आयडल वर्शिपिंग, बोधिसत्वा, इन्कार्नेशन. म्हणजे ओरिजिनल जो मूळ बुद्ध धर्म होता त्या मूळ बुद्ध धर्मामध्ये आणि काही नवीन भारतीय हिंदू धर्मातल्या गोष्टी त्यांनी ऍड केल्या, जसं स्टॅच्यूज बनवणं. बिकॉज हीनयाना रिलिजन इज अ ओरिजिनल बुद्धिझम वेअर आयडल्स ऑफ बुद्धाज वेअर नॉट मेड. द ओरिजिनल बुद्धाज टीचिंग्स, बुद्ध जिवंत असताना त्यांनी जे काही फॉलो केलेलं होतं, जे पाथ फॉलो केलेला होता तोच फॉलो हीनयानाचे लोक फॉलो करतात. महायानामध्ये बुद्ध धर्मामध्ये नवीन गोष्टी ऍड करणार, जसे की गौतम बुद्धाचे इमेज बनवणे, आयडल बनवणे, त्यांची पूजा करणे, किंवा बोधिसत्वाचा कन्सेप्ट त्यांनी आणलं आणि पैसे देऊन पुण्य आपण खरेदी करू शकतो. हा कन्सेप्ट, हे कन्सेप्ट महायाना रिलिजन मध्ये नंतर आलेला आहे. तर अशा प्रकारच्या ज्या बिलीफ्स आहेत ना, की पुढे भविष्यामध्ये एखादा अवतार येईल आणि पुन्हा तो आपल्याला सेव्ह करेल, जसं हिंदू धर्मामध्ये विष्णूचा अवतारला बिलीव्ह केलं जातात, असं फिलॉसॉफी इज देअर इन महायाना रिलिजन, नॉट इन हीनयाना रिलिजन. तो हीनयाना रिलिजन इज अ ओरिजिनल, मतलब त्याच्यामध्ये त्यांनी कुठल्याही प्रकारचा बदल होऊ नये असं बिलीफ असणारे जे होते ते हीनयाना. आणि महायाना काय होते की जसं जसं जग बदलेल, जसं जसं सिच्युएशन येईल तसं तसं आपल्याला धर्मामध्ये देखील बदल करायला पाहिजे असं बिलीव्ह करणारे जे लोक, जे फॉलोअर्स होते, त्याला आपण म्हणतो महायाना बुद्धिझम. गॉट इट? एनिवेज, आता Yes, इथे sir. प्रश्न विचारलेला आहे, with reference to the Indian history, who among the following is the future Buddha yet to come to save the the world? मग इथे ऑप्शन दिलेला आहे, अवलोकेटेश्वरा, लोकेश्वरा, मैत्रेया अँड पद्मपाणी. लास्ट इयर पद्मपाणी से रिलेटेड क्वेश्चन था, याद आहे? Yes. 2000 बघा, 2017 मध्ये पद्मपाणीवर विचारलेला आहे आणि 2018 मध्ये देखील विचारण्यात आलेला आहे. म्हणजे काय की युपीएससीचे मेजॉरिटी जे प्रश्न असतात दे आर बेस्ड ऑन द प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर. दॅट्स व्हॉट आय एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू. क्लिअर? तो फ्युचर बुद्धा भविष्यामध्ये कोण येणार आहे असं विचारलेलं आहे. अवलोकेटेश्वरा, अवलोकेटेश्वरा इज ऑल्सो बोधिसत्व, लोकेश्वरा इज ऑल्सो बोधिसत्व, मैत्रेय अजून येणार आहे. मला वाटतं मैत्रेय इज द करेक्ट आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन. जस्ट कन्फर्म इट. इज इट सी? येस सर, येस. मैत्रेय. Yes, sir, मैत्रेय हे फ्युचर मध्ये येणारा बुद्ध आहे असं बुद्ध धर्मियामध्ये खास करून महायाना बुद्धिझम बिलीव्स इन दॅट, राईट? पद्मपाणी वॉज अ bodhisattva, Lokeshwara was a bodhisattva, and Avalokiteshwar is also a bodhisattva, right? तो आता आन्सर मैत्रेय आहे, तर काय, what you should study? Who is Padmapani, right? Or who was Avalokiteshwara and who was Lokeshwara? होऊ शकते नेक्स्ट इयर 2019 एक्झाम मध्ये हा प्रश्न विचारण्यात येईल. येस और नो? Yes sir. चल, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बाकी के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. Modern Hellenistic questions we have already discussed. Now we'll go to एक और क्वेश्चन है यहाँ पे. 1920 who among the following changed स्वराज्य सभा, मतलब स्वतंत्र पार्टी. Apart from Congress also there were some other political parties also in India. That's what you need to check it out. बैरन आइलैंड, डू रिमेम्बर? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, सॉरी ज्योग्राफी में पढ़ा था हमने. Barren Islands are located in Andaman and Nicobar Island. Barren Yes, Island sir. is the Yes, sir. only active volcano, right? Barren Island volcano is an active volcano located in Indian territory. Correct or wrong? करेक्ट सर. कळालं No, का? sir. Directly taken from NCERT, the NCERT which we are referring for geography, right? Second, Barren Island lies 140 kilometer east of Great Nicobar, right? अब ये 140 ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार, whether it is located in Great Nicobar or not. Anyone remember?
बैरन आइलैंड वाज इन निकोबार और इट वाज इन अंडमान? मैंने बताया था ऐसे पूछा जा सकता है. Last time the Barren Island volcano erupted was 1991. It has remained inactive since then. So which one is the correct answer? One correct है. So if one is correct, answer will be 1 and 3. One only, or it could be 1 and 3. The second will be wrong. There are two chances. Why second statement is wrong? Because एक तो ये 140 किलोमीटर नंबर हमेशा यूपीएससी में क्या होता है, गलत होता है. Most of the time, not हमेशा, but most of the time. And Great Nicobar में था. Whether it was it on the east of the Great Nicobar or was it on the the Great Nicobar and other Nicobar is also there. तो second wrong होने के chances ज्यादा है. तो third में भी also last time it was in 1991. Answer could be either 1 only or 1 and 3 only. Most chances are that 1 and 3 only could be the correct answer of this question. Am I right? One. Yes, sir. One. What is the answer? 1 only or 1 and 3? Sir, I think 1 and 3 One, sir. only. No, if someone is having answer key, कोणाकडे आहे का answer key? Just check it out. Is it 1 only? Yes, sir. One. Okay. 3 क्यों गलत है? 1991 year. तर ते 2017 मध्ये इरुप्ट झालं होतं सर त्यानंतर. Yes, right. इथं कोरल रीफच्या संदर्भात प्रश्न विचारण्यात आलेला आहे. कोरल रीफ आपण जॉग्राफी मध्ये बघितलेलं होतं. आपण जॉग्राफीचे क्वेश्चन बघत असताना वी विल चेक इट आउट अगेन. यस, क्वेश्चन नंबर 89. डू यू रिमेंबर विलियम जोन्स पे क्वेश्चन पूछा था लास्ट ईयर 2017 और 2016 में पूछा था क्वेश्चन. विलियम जोन्स हु अमंग द फॉलोइंग हैज एस्टैब्लिश्ड द कॉलेज, ऐसे क्वेश्चन पूछा था विथ रेफरेंस टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया. विलियम जोन्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, आर्थर वेलेस्ली. मैच द पेयर में क्वेश्चन पूछा है. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है. चेक इट आउट. वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन के दौरान. Fine. So these are all the questions in 2018 prelims question paper, right? The questions where you can check it out. The overall trend of 2018 was that majority of the questions were on Buddhism, paintings, his cultural history, architecture of the Mughal period, right? And there were some direct questions also, जैसे कि कीर्ति selected question पूछा था. Was it in devotion of Lord Krishna or Lord Ram? भक्ति मोमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे. तो क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं समझ में आ रहा है मॉडर्न एंड एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में? Yes, sir. Yes. ठीक है, चलिए. सो रिवाइज अकॉर्डिंगली. once you are finished with the revision, we will be having the mock test as per the recent time. तो अब ये 2018 का है. 2019, 20, 21, 24 ये सारे क्वेश्चन पेपर होने के बाद we will be having a one mock test from ancient and medieval Indian history. Clear? Yes, sir. Chali, so we'll stop it here. We'll continue with the newspaper class in the evening. Since I'm fasting, I'm not in a position to take the polity class in afternoon session. So let's see कब हम पॉलिटी के रिमेनिंग टॉपिक कवर कर सकते हैं. कहाँ तक आया है पॉलिटी अपना? We have started with executive legislature, I think, right? Executive हाँ, legislature DPSP and के भी आगे गए हैं. हाँ, DPSP हो गया है. So we are supposed to study about the structure and composition of union legislature, executive and judiciary. ये टॉपिक बाकी है पॉलिटी में, राइट? जो हमने शुरू किया था और उसे हमें स्टडी करना है. ठीक है, लेट्स सी whether we can have it today itself. 4-5 बजे के आसपास में if I'm having energy, I will try to take that class. Okay, just देखते रहिए. I will Yes, notify just half an hour before if I am going to take the class. If is any message is coming in the WhatsApp or Telegram channel, please keep watch on that. So अगर if I'm having an energy, we will continue with the polity class. Okay? Okay, sir. Yes, sir. Because exam नजदीक है, we need to finish polity, we need to finish geography, we need to finish economy as well. Economy भी subject बहुत सारे लोगों का हुआ नहीं है. तो before your prelims exam, we need to finish the basics of economy, basics of polity, basics of environmental studies as well.
So let's see if we can complete it. Okay. Yes, sir. Okay, sir.